Hello children, welcome to your English class. So we are going to continue with our sight words. Okay, first let's do the revision of few sight words which we have already done. Remember, let's take a revision. अपने दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे और मैम के पीछे पीछे रिपीट करेंगे कि हमने कौन कौन से sight words लर्न कर लिए हैं. ठीक है, let's check. This is I-N. In. I-N. In. Next one. T-H-E. The. T-H-E. The. Next. I-S. Is. I-S. Is. Let's take the next one. T-H-I-S. This. T-H-I-S. This. The another one. T-H-A-T. This is that. T-H-A-T. That. Okay. The another one is O-N. On. O-N. On. And the last one which we have done was under. U-N-D-E-R. Under. Okay. So let's repeat. These are the few sight words जो आपको बार बार sentences में मिलेंगे for LKG. ठीक है? So these are the basic ones which we are going to read it again and again and again. ठीक है? तो थोड़ा सा आपको practice हो जाएगी, revise हो जाएगा. Okay? Let's read once again. I-N-N. T-H-E. The. I-S. Is. T-H-I-S. This. T-H-A-T. That. O-N. On. U-N-D-E-R. Under. Okay? आज हम रिवाइज करेंगे U-N-D-E-R. Under. ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने किया था. यस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन कराया था. अंडर का मतलब है कोई भी चीज नीचे. ठीक है ना? क्लियर? एंड वी हैव डन पेज नंबर 43 एंड 44 एज आवर रीडिंग. यस, रिमेंबर? ओके. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अंडर. ठीक है? साइट वर्ड और प्राइमरी वर्ड अंडर. एंड वन न्यू इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू डू, दैट इज H-A-S. Has. H-A-S. Has. Now for has. H-A-S. Has. Has का मतलब क्या होता है? Has का मतलब है कोई भी चीज आपके पास या किसी के पास है. जैसे she has a doll. उस लड़की के पास एक डॉल है. ठीक है? Like that boy has a ball. उस बॉय के पास एक बॉल है. ठीक है? तो has वर्ड यूज होता है उसके पास है. क्लियर? जैसे rat. Rat has a cheese. Rat के पास एक चीज का टुकड़ा है. Yes? So when we'll read the page, reading page from Interactive Approach to English Reader, there you will see the picture and you will read the sentence. Then you will be clear. आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि has का मतलब क्या होगा. Okay? So let's move to our reading section from Interactive Approach to English Reader. There first we are going to read primary word under. We'll take a revision for primary word under from page number 43 and 44 as well as 45. 45 थोड़ा mix exercise है. ठीक है? हम वो रीडिंग करेंगे. Then we'll move further for sight word has. Okay? So let's do our reading. Let's start our reading section from Interactive Approach to English Reader, Part A, and page number 43. We are going to revise the primary word under. Ready? A girl is under the tree. A bag is under the tree. A pup is under the tree. A ball is under the tree.
A man is under the tree. A cot is under the tree. Okay? This was page number 43, primary word under. Let's check more sentences on page number 44. A dog is under the bed. A cat is under the table. A kid is under the tree. A doll is under the chair. The man is under the fan. Okay? So this was page number 44 under. Here on page number 45, we have revision. Revision page. This is called revision page. Let us read. Okay? Look at the picture first properly. There is a window. We have curtains, fan, a picture, a chair. There are two chairs. Okay? And one man is sitting. One table is there. One cat, mat, tin and a rat. Okay? Now based on this picture, we have few sentences. ये mixed sentences है सारे sight words के. ध्यान से देखेंगे. Okay? Ravi is on the chair. On. Ravi chair के ऊपर बैठा है. Okay? Next is the cat is under the table. Under the table. Table के नीचे. The dog is under the chair. Dog is under the chair. Chair के नीचे है. Under. Ravi is under the fan. Ravi fan के नीचे बैठा है. Okay? Under. Next, the rat is in the tin. The rat is in the tin. Tin के अंदर. Okay? So this was page number 45. This you have to read. Okay? Next we'll go to page number 46. जो आज हमने किया है. Page number 46. Introduction of has. Primary words has. Clear? Let's start. मैंने आपको बताया था आप पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम has किस लिए यूज करते हैं. ठीक है? has मैंने आपको बता दिया. अगर आपके पास या किसी के पास कुछ होता है ठीक है, तो हम has यूज करेंगे. Ready? Raja has a ball. He is Raja and he has a ball. Raja has a ball. Okay? Next. The cat has a bell. This cat has a bell. The cat has a bell. Cat के पास bell है. ठीक है? Next. Rita has a doll. She is Rita. Okay? Rita has a doll. उसके पास doll है. Okay? Next one. The dog has a bun. This is dog. इसके पास क्या है? Bun. Okay? The dog has a bun. Dog के पास bun है. Next is the cat has a rat. Has. The cat has a rat. इसके पास एक rat है. ठीक है? जो इसने मुंह में रख रखा है. Clear? Next. Ashok has a cap. Has. Ashok. He is Ashok. Okay? Ashok has a cap. Okay? So this was your reading from page number 46. Let's read it once again. First. Raja has a ball. The cat has a bell. Rita has a doll. The dog has a bun. The cat has a rat. Ashok has a cap. Okay? So this was all for our today's reading. So that was all for our reading. We have done revision for under, primary word under, and has. New chapter we have done, new page for reading has.
Page number 43, 44, 45 and 46. Okay. Now let's move to our writing section. In writing section, we are going to do the exercise based on under. UNDER, under. ठीक है, मैंने आपको बताया है sight word की exercises are only for reading. There will be no written exams for sight words. ठीक है, sight words के लिए कोई written exam नहीं होगा, कोई भी writing पर्सन नहीं होगा. मैं आपको एक्सरसाइजेस इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको एक छोटा सा रिवीजन हो जाए. आप खुद पिक्चर्स ड्रॉ करके आप सेंटेंस में लिखेंगे, फिलअप्स लिखेंगे, तो आपको एक रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके, इट इज नॉट फॉर राइटिंग एग्जाम, इट इज फॉर orals. It is only for orals and reading. Clear? Let's start our writing section. Take out fresh page. Write down today's date 21.12.21 classwork. And this is the page for handwriting. और handwriting के लिए मैम ने जो sentences लिए हैं, we are using sight word under. Okay? Let's read the sentence first and then we'll write इन नेक्स्ट लाइन. ठीक है, फर्स्ट लाइन मैंने लिखा है, नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अ बॉय इज अंडर द टब. लेट्स राइट अ बॉय, BOY बॉय, IS इज अंडर, UNDER under, the, 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 tub, 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 and then full stop. You have to see the 4 lines. आपको ये सारे 4 lines properly use करना है. ठीक है? Okay. Next is a cat, 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 is, IS is, under, 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 the, 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 cot, 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 full stop. ध्यान रखेंगे जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, देन यू हैव टू यूज कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विथ फुल स्टॉप. ओके, कम टू सेंटेंस नंबर 3. अ मॉप इज अंडर द बेड. लेट्स राइट अ मॉप, MOP, mop is under, 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 the, 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 bed, 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 full stop. Next line. A pup is under the wig. Let's write down a pup, 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 is under the wig, WIG, wig. Okay, next one. A pen, 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 is under the net, NET, net. Okay, so this was your handwriting page. I have given you 5 sentences using under, and you are going to write it nicely with sharp pencil and neat eraser. Okay? Now let's come to our English conversation question. We are going to revise question number 9. Yes, in previous video we have done question number 9.
Today we are going to revise it. So question number 9 says, who is the headmistress of your school? Who is the headmistress of your school? आपकी प्री प्राइमरी विंग में आपके प्री प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस कौन है? ठीक है? Your answer will be Sister Mabel is our headmistress. Sister Mabel is our headmistress. Okay? I'll repeat once again. Sister Mabel is our headmistress. Okay? So this was question number 9. Let's move to question number 10. Now question number 10 says, who is your best friend? Question number 10 says, who is your best friend? Yes, सबके पास फ्रेंड होते हैं ना? Yes, आपके सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा फ्रेंड आपका कौन है? उसका नाम आपको बताना है, ठीक है? Okay, so your answer will be Dash is my best friend. मैम ने डैश क्यों लगाया है? क्योंकि मैम को आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं पता. Yes, सबके अलग अलग बेस्ट फ्रेंड्स है ना? Yes, तो आपको इस डैश में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बोलना है. ओके? जैसे मैम की बेस्ट फ्रेंड का नाम है रेनू. ओके? तो मैम क्या बोलेंगी? रेनू इज माय बेस्ट फ्रेंड. ओके? रेनू इज माय बेस्ट फ्रेंड. यस, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो मैं आंसर बोलूंगी रेनू इज माय बेस्ट फ्रेंड. ओके? ऐसे ही आपको भी कोई क्वेश्चन करता है कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आपको आंसर देना है डैश. डैश में आपके फ्रेंड का नाम. डैश इज माय बेस्ट फ्रेंड. ठीक है? आपके फ्रेंड का नाम कुणाल है तो आप बोलेंगे कुणाल इज माय बेस्ट फ्रेंड. आपके फ्रेंड का नाम अगर माहिका है तो आप बोलेंगे माहिका इज माय बेस्ट फ्रेंड. ओके? लाइक दिस यू आर गोइंग टू गिव द नेम्स. ओके? So that was all for our English conversation question. All the 10 questions are over. मैंने सारे 10 questions आपको करा दिए. ठीक है? Go to the description of this video. Find out all the 10 questions from there and learn it in full sentence. I have shared the PDF of the syllabus. Under second term there are 10 questions. Learn from there also. आप वहां से भी full sentence में आंसर लर्न करेंगे. Remember it is LKG and second term exam आने वाला है, तो आप शॉर्ट में आंसर बिल्कुल नहीं देंगे. You have to give your answer in full sentence. This time marks कट करा जाएगा. ठीक है? It has to be in full sentence. Remember this. Clear? So today's recap is we have done the concept of UNDER. Under we have taken the revision. Page number 43, 44 and 45, and we have introduced has, sight word has. ठीक है? हमने HAS has introduce किया है on page number 46. Okay? So that was your reading part also we have done with the same, and for writing section we have done the exercise based on under. ठीक है? हमने कौन से एक्सरसाइज करी है? Under, sight word under की एक्सरसाइज करी है only for reading purpose. Clear? And we have done the conversation question. Question number 9 we have revised, and question number 10. Who is your best friend? Okay? So that was all for the today's class. We will meet in the next class. Till then, be safe and stay at home.